Good morning, students. Today we'll discuss about production function and returns to a factor. Okay. First of all, if we discuss about the production function, as we all know that it is the functional relationship between physical inputs and physical output. Okay. And it is technically expressed as Qx. That means the quantity of X commodity is equals to the function of inputs, and we have two inputs, one is labor and other one is capital. Okay, we are using two factors of production, labor and capital. Okay, these factors of production are known as inputs. Okay, as we all know that to produce something we will be using some units of input or some factors of production to produce some output. Okay, so technically it is the functional relationship between physical output and physical input. Okay, the functions of physical inputs. That means physical inputs will function to produce some units of output. Okay, so functional relationship between physical inputs and output is production function. Okay, now we are taking these two factors of production. One is labor and other one is capital. Okay, so these are divided into two parts. One is variable factor and other one is fixed factor. Okay, the capital will remain fixed. Okay, if we talk about the short-run production function, we'll discuss the production function according to the time period. One is short-run and other one is long-run production function. Okay, if we talk about the short-run production function, the factors will be divided into two categories. One is variable and other one is fixed factor. Okay, what does it mean? It means the variable factors, that is labor, the units or the size or the quantity of this factor can be changed according to the size of production. Means if the producer do want to change the size of production, it can only be changed with the help of variable factors. That means the labor units can be either increased or decreased to change the quantum of production. Okay. On the other hand, the capital will remain fixed as it is known as the fixed factor. Okay. It also means the units or the units of the factors which does not change with the size of production. Okay, fixed factor means the units of factors of production or the factors of production which does not change with the size of production. Okay, जो production की quantity या size के साथ change नहीं होता है वो हमारे fixed factor होते हैं. Okay, and जो production की size या quantity के साथ change होता है, that means if we do want to change the production, that means change means either increase or decrease. अगर producer increase करना चाहता है तो obviously the units of variable factor has to be increased. That means labor units बढ़ानी पड़ेंगी. Okay, अगर production increase करना है तो, और अगर production decrease करना है तो variable factor की units decrease कर दी जाएंगी. That means it goes along with the size or the quantum of production. Okay, production increase करना है तो इनका size increase हो जाएगा. Okay, number, quantity और size कुछ भी कह सकते हैं. Okay, size, quantity और number of variable factors can be changed according to the quantum or the units of आउटपुट. ओके, आउटपुट का जो साइज है, स्केल है, क्वांटिटी है, उसके अकॉर्डिंग ये वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज वेरिएबल फैक्टर बिकॉज इट कीप्स चेंजिंग, वेरी करता है प्रोडक्शन के साइज के साथ. दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज वेरिएबल फैक्टर. ओके, एंड इन आवर केस वी आर टेकिंग लेबर एज अ वेरिएबल फैक्टर एंड कैपिटल एज अ फिक्स्ड फैक्टर. ओके, इन शॉर्ट रन द प्रोडक्शन फंक्शन इज read as Qx is equals to the function of labor and capital, K constant, K bar. Short run में जो है हम K bar use करेंगे. K bar represents the K constant. That means the capital will remain fixed. Okay, in short run, capital factors or the capital as a factor cannot be changed. Okay, here the capital word is used for machines. Okay, नॉट फॉर द मनी. ओके, यहाँ पे हम मनी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, मनी के लिए कैपिटल फैक्टर को यूज़ नहीं कर रहे हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर मशीन्स. ओके, मशीनरी. दैट मीन्स इन शॉर्ट रन machineries or the number of machineries cannot be increased by the producer because short run is such a small time period in which न्यू मशीन्स कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड. ओके, क्योंकि ये काफ़ी महंगी हैं, काफ़ी कॉस्टली मशीन्स हैं, तो एक मशीन को रिप्लेस करना है, एक नई मशीन ऐड ऑन करना प्रोड्यूसर के लिए काफ़ी ट्रबलसम हो सकता है. ठीक है, उसके पास उतना फंड ना हो. ठीक है, तो शॉर्ट रन एक काफ़ी स्मॉल टाइम पीरियड होता है, इसलिए हम कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, रिप्लेस या फिर इंक्रीज नहीं कर सकते हैं. ओके, दैट्स व्हाई इन शॉर्ट रन कैपिटल इज रिमेन्ड कांस्टेंट. ओके, सो इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन algebraically it is expressed as Qx is equals to
function of labor and capital, whereas capital remained constant. That's why we have used K bar. Okay. In long run, it is read as Qx is equals to function of labor and capital. Now we are not using K constant or K bar because it means K is also variable. Okay, that means we can increase or decrease the capital as a factor of production. Okay, if we do want to increase the output, Qx is the output, units of output. Okay, X is the commodity. A commodity का नाम है X. Okay, and Q is used for quantity. That means quantity of X commodity. Obviously, that is output. Okay, is equals to the function of labor and capital, and labor and capital are the factors of production. Okay, that means both the factors are variable in long run. Okay, long run में हमारे पास दोनों ही factors variable हैं. That means if the producer do wants to increase the output, the units of the factors, both the factors can be increased. The units of both the factors can be increased. Okay, whereas in short run K was constant. K bar हमने use किया था. Okay, that means capital की units हम increase नहीं कर सकते हैं. Only labor units can be increased. Okay, so that was the production function. Okay, हमने यहाँ पे fixed and variable factor भी discuss कर लिए हैं. Okay, next if we talk about the short run and long run production function. Okay, differences between short run and long run production function. Okay, so first of all, the short run difference we are talking about, the short run and long, what is the difference between short run and long run production function? Okay, long run production function में और short run production function में क्या difference है? Basically एक difference तो हमने यहाँ पे देखा था कि capital short run में जो हमारा capital था वो fixed रहता था. Capital as a factor of production remained constant or fixed in short run or during short run production function. Okay, whereas in long run the capital as a factor of production can be changed. Okay, according to the size of output. Okay, so this is the difference. इस difference से हमने एक point निकाला. The short run production function is known as variable proportion variable type of production function, or you can say further elaborate करें, so that can also be termed as variable proportions type of production function. Okay, variable type of production function or variable proportions type of production function. Okay, this term elaborates it very clearly as the variable proportions we are discussing. Okay, now what are we talking about? The proportion, which proportion we are talking about? किसके बीच का जो proportion है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. So this proportion is of variable factor and fixed factor. Okay, दो factors of production हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे. One is variable and other one is fixed factor. Okay, so इन दोनों ही factors के बीच का proportion हम consider करेंगे. Okay, so in short run production function, the proportion between the factors keeps changing with the size of production. Okay, for example, here we are taking the output or the quantity of output. Okay, when 1 unit was produced, 2 units of laborers, as labor is the variable factor and capital is our fixed factor. Okay, that will remain same. Okay, it will not change. Variable labor ही रहेगा और fixed capital ही रहेगी. Okay, so 2 units of laborers were used and 2 units of capital were also used to produce 1 unit of output. Further, producer wanted to increase the production. Okay, so 1 more unit is being produced. Now, if the production has been increased, obviously factors of production will also be increased. Okay, if the producer do want to increase the production, factors will also be increased. Okay, but the point is fixed factor cannot be changed, so it will remain constant. 2 units of capital will remain as it is. Okay, what will change here? The units of variable factors of production will be changed. Okay, so 3 units of laborers are being used to produce 2 units of output. Okay,
Initially, the producer was producing 1 unit, so 2 units of laborers were engaged. Now the producer has increased the production and is producing 2 units. Okay. Now 3 laborers are being used or engaged to produce 3 units. Okay. Now if we talk about the proportion between the factors, the proportion of the factors. When 1 unit of output was produced, the proportion was 2:2. That means 1:1 also it can also be said as 1:1 or 2:2. Okay, the proportion was like this. Now, when the producer is producing 2 units, the proportion of the factors or the proportion between the factors of production has changed from 1:1 to 3:2. Okay, now the proportion has been changed. जब 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी तो प्रोपोर्शन जो फैक्टर्स के बीच का प्रोपोर्शन था, ओके, यहाँ पे जो हम प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं दैट इज द फैक्टर प्रोपोर्शन. ओके, फैक्टर प्रोपोर्शन की हम बात कर रहे हैं. ओके, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनके बीच का प्रोपोर्शन क्या है. ओके, जब 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी तो फैक्टर प्रोपोर्शन था 1:1, और यू कैन ऑल्सो से दैट 2:2. ओके, 1:1. ओके, नाउ जब प्रोड्यूसर ने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू की हैं, ठीक है, तो उसने लेबरर्स का जो नंबर है वो इंक्रीज कर दिया. कैपिटल रिमेन्ड सेम बिकॉज इट इज़ अ फिक्स्ड फैक्टर. शॉर्ट रन में हम कैपिटल की यूनिट्स को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं. ओके, सो द फैक्टर प्रोपोर्शन हैज़ बीन चेंज नाउ. इट इज़ 3:2. ओके, 3:2. ओके, सो दैट्स व्हाई the factor proportion keeps changing. As the size of production changes, the factor proportion also changes, because in short run, point derived from the concept that in short run only one factor will be variable or one factor will remain variable, that is labor factor. Okay, whereas the fixed factor capital cannot be changed. Okay, that's why the factor proportion keeps changing. Okay, if the fixed factor can also be changed, the factor proportion may remain same or constant. Okay, अगर हम शॉर्ट रन में भी फिक्स फैक्टर या कैपिटल को चेंज कर सकते तो हमारा फैक्टर प्रोपोर्शन जो है वो सेम रह सकता था. ठीक है, लेकिन वेरिएबल फैक्टर ही अकेला लेबर ही वेरिएबल फैक्टर है शॉर्ट रन में. कैपिटल जो है हमारी फिक्स्ड फैक्टर है. ठीक है, इस वजह से हमारा फैक्टर प्रोपोर्शन जो है शॉर्ट रन में चेंज होता है. दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इफ द प्रोड्यूसर वांट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, he or she can only increase the variable factor, units of variable factor. Okay, the other factor, that is capital, will remain constant. Okay, if we talk about the proportion, factor proportion, okay, the factor proportion, variable factor and fixed factor के बीच का proportion हम calculate करेंगे तो it will change or it keeps changing with the size of production. Okay, furthermore, if the producer increases the production, okay, it may be 5:2, 4:2. Okay, so the factor proportion is ever changing in the short run. That's why it is known as variable proportion types of production function. Whereas in long run production function is known as the constant proportions type of production function. Okay, short run was variable proportions type of production function. Long run is constant proportions type of production function. Okay, long run production function is constant proportions type of production, because in long run all the factors are variable. Okay, that means the number of all the factors can be changed with the size or the quantum of production. Okay, for example, if the producer do want to increase the production, he can increase both the factors, labor and कैपिटल. ओके, लेबर और कैपिटल दोनों की यूनिट्स वो इंक्रीज कर सकता है अगर उसे प्रोडक्शन इंक्रीज करना है. ओके, अगर डिक्रीज करना है तो दोनों की ही डिक्रीज कर सकता है. वेयरएज शॉर्ट रन में ऐसा नहीं था. शॉर्ट रन में एक अकेला जो लेबर फैक्टर था वही वेरिएबल था. ओके, सो इफ द प्रोड्यूसर हैज द चॉइस टू चेंज बोथ द फैक्टर्स, ओके, दैट्स व्हाई द प्रोपोर्शन बिटवीन द फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोडक्शन फंक्शन. ओके, for example, variable and fixed factor, we are taking the proportion between variable and fixed factors. Okay, so units of output 1, 2, 3. Okay, the production is increasing from 1 to 3 units. Okay, variable factor, initially the variable factor units, 2 units were being used and 2 units of fixed factor were also being used. Labor की भी 2 units and capital की भी 2 units उन्होंने use की है to produce 1 unit of output. Okay, further the producer want to increase the production और the production has been increased to 2 units. Okay, एक further unit produce करना चाहता है
तो लेबर फैक्टर भी इंक्रीज करेगा. एज इट इज द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, द प्रोड्यूसर कैन ऑल्सो इंक्रीज द machines or the capital, okay, to increase the production. Clear? So if we talk about the proportion, that is 1:1 or 2:2. Okay, 3 units of laborers are being used and the capital units are also increased by the producer. 3 units of capital has also been used. The proportion is 1:1, 4:4. To further increase the production, the producer has increased the labor factor as well as the capital or the fixed factor also. Okay, now it is not fixed. In long run there is no such factor which can be said as a fixed factor or which can be told as a fixed factor or called as a fixed factor, because in long run all the factors are variable. See, the capital is also changing with the size of production, 2, 3, 4. That's why we cannot say that capital is a fixed factor in long run. Okay, so long run में fixed factor नाम की कोई चीज़ नहीं होती है. Okay, सारे factors variable होते हैं. So if we write labor and capital, okay, that will be better. Okay, so the proportion of labor and capital remained constant और same throughout the production function. Okay, अगर production बढ़ाना है तो उसे दोनों ही या producer जो है दोनों ही factors को change कर सकता है, sorry increase कर सकता है. Okay, और production change करना तो दोनों factors को change कर सकता है, you can say. Okay, so that means in fixed long run time period the proportion of the factors, the proportion between the factors will remain constant. It will not change. Because क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल इन लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं. ओके, सो द फर्स्ट डिफरेंस वाज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वाज वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. दैट मीन्स फैक्टर्स के बीच का प्रोपोर्शन चेंज हो रहा था. whereas in long run it is constant proportions type of production function. Okay, long run में constant proportions type of production function है. Okay. Now we talk about the various elements or principles or the factors of production, say AP, TP and MP, the components of production, total production, average production and marginal production, and their relationship, okay, and the stages of or different stages of production. Okay. So first of all, we will talk about the components of production. TP, AP and MP. TP is total production or total product, you can say. AP is average product and MP is marginal product. Okay. TP is, as the name suggests, total product. That means it is the sum total or summation. Okay. Sum total of units of output or summation of output, summation QX. Okay. It can be written as summation QX. QX, that means quantity of X commodity. X is the commodity. We have named the commodity as X. Okay. And Q is the quantity of X commodity. Okay. So it can be written algebraically as summation QX. That means sum total of all the units of output. QX is the output. Okay. हम X commodity produce कर रहे हैं और उसकी जितनी units produce की हैं, that is the quantity of X commodity. Okay. So that can be written as summation QX. Okay. If we define it, it is the sum total of units of output produced by using some units of factors of production, labor and capital we were using. Okay. So it is the sum total of output produced by using some units of input. So this is total. Sum total of output. Okay. Whereas average, as the name suggests, it is average product. Okay. So average product is the output per unit of labor. Okay. If we talk about the short run production function. Okay. We are talking about the short run production function. हम यहाँ पे long run production function नहीं पढ़ रहे हैं, short run production function पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो short run production function की बात करें तो average production is defined as output per unit.
of labor, because labor is the only variable factor. Okay, अगर हमें आउटपुट इंक्रीज करनी है तो सिर्फ लेबर ही अकेला ऐसा फैक्टर है जिसकी हेल्प से हम आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर. ओके, सो एवरेज प्रोडक्ट इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर, और यू कैन ऑल्सो से आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट. ओके, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट, it is the difference, margin. Okay, marginal as the name suggests, it is the margin, the difference. लेकिन किसका difference? Total का. Okay, so it is the difference of various stages of total production. When extra or additional units of labor are being implemented or used, that means TP में जो difference, TP के different stages में जो difference आता है, जो margin है TP के जो various stages हैं उनका जो difference है, okay, उस डिफरेंस को ही हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं. ओके, और ये डिफरेंस कब आता है? जब हम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर यूज़ करते हैं. दैट मीन्स टीपी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? लेबर में चेंजेस की वजह से. अगर टीपी इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स हमने लेबर यूनिट्स इंक्रीज की होंगी. अगर टीपी डिक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स हमने लेबर यूनिट्स डिक्रीज की है. ठीक है, सो ऑल दैट हैपन्स टू टीपी इज जस्ट बिकॉज ऑफ लेबर फैक्टर. ओके, सो मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज addition to TP, addition to TP. ओके, टीपी में जो भी एडिशन होता है, जो भी इंक्रीमेंट आता है, ओके, कब? एडिशन टू टीपी व्हेन एन एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा लेबर की हम बात करेंगे, ऐसा नहीं कि 10 लेबर इकट्ठे लगा दिए. ओके, सो एक लेबर एक्स्ट्रा यूज करने पे टीपी में क्या एडिशन होता है? ओके, दैट एडिशन इज नोन एज, ओके, मैंने बोला डिफरेंस, मार्जिन डिफरेंस है. ओके, तो जो एडिशन हुआ वो भी डिफरेंस है. 1 से 2 यूनिट प्रोड्यूस की गई. अर्लियर वी वर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. दैट मीन्स टोटल टीपी इज 2 यूनिट्स. द डिफरेंस इज अर्लियर टीपी वॉज 1 यूनिट, now the TP is 2 units. The difference is 1 unit. That means 1 more unit is being produced by the producer now. Okay, so the addition, that 1 unit is being added to TP 1 to 2. Okay, एक extra unit हमने add की है. कब? When an extra labor is applied or used. एक एक्स्ट्रा लेबर अप्लाई करने पे, ओके, व्हेन एन एक्स्ट्रा लेबर इज अप्लाइड, एन एक्स्ट्रा लेबर इज अप्लाइड, ओके, देन द एडिशन मेड टू टीपी, दैट एडिशन इज नोन एज एमपी. ओके, दैट मीन्स ये जो एक एक्स्ट्रा यूनिट हमने टीपी में ऐड की है टू मेक इट 2 यूनिट्स, टोटल प्रोडक्ट अब 2 यूनिट हो गया है. कब? जब हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड की है अर्लियर प्रोडक्शन में. ओके, सो दैट एक्स्ट्रा यूनिट इज नोन एज एमपी. ओके, टीपी की डिफरेंट या वेरियस स्टेजेस का जो डिफरेंस है वो हमारा एमपी होता है, और इट इज डिफाइंड एज एडिशन टू टीपी और एडिशन मेड टू टीपी when an extra unit of labor is applied, that is MP. Okay, ये हमारी डेफिनेशन थी TP, MP और AP की. ओके, नाउ इनका हम ग्राफिक एंड टैब्यूलर प्रेजेंटेशन देखेंगे कि इनका रिलेशनशिप क्या है, इनके बीच में क्या रिलेशन है. ओके, see labor units, we are taking the variable factor only because TP changes with लेबर ओनली. ओके, क्योंकि टीपी में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ लेबर की वजह से आ रहा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ लेबर यूनिट्स लेके चलेंगे. दैट इज क्यू. आउटपुट भी लिख सकते हैं इसको, क्वांटिटी. ओके, और टीपी में लिखो इसको टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. ओके, व्हेन 1 लेबर यूनिट वाज बीइंग यूज्ड, जब एक लेबर यूनिट हमने यूज की थी, टोटल आउटपुट थी 50 यूनिट्स वर बीइंग प्रोड्यूस्ड. एपी निकलेगा. ठीक है, फॉर्मूला है एपी का एवरेज निकालने का, टीपी डिवाइडेड बाय एल, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय लेबर यूनिट्स. टीपी इज 50 एंड एल इज 1, तो एपी क्या होगा? 50 डिवाइडेड बाय 1. एमपी इज इक्वल्स टू TPN minus TPN minus 1. Total product at nth unit minus total product at n minus 1 unit. Okay, इसको भी हम बताएंगे. N is the total number of units
ओके ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है, लेकिन किसकी? लेबर की। यहाँ पे जो n है ये लेबर यूनिट्स को डिफाइन कर रहा है। ओके एट 1 यूनिट ऑफ लेबर टीपी वॉज 50, सो टीपी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। n इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर, n जो है लेबर यूनिट्स को डिफाइन कर रहा है। ओके n इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर, सो n की वैल्यू मैंने डिफाइन की है 1, n इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट MP एट 1 यूनिट ऑफ लेबर, लेबर की एक यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। ओके सो TPN एट nth यूनिट ऑफ लेबर TP इज 50 माइनस TPN माइनस 1, n की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स TP एट 0 यूनिट्स। ओके सो 0 यूनिट्स ऑफ लेबर पे टीपी क्या था? जब हमने कोई भी लेबर यूज़ नहीं किया था तो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ ही नहीं होगा, लेबरर्स यूज़ ही नहीं किए हैं, सो टीपी वो 0। ओके सो 50 माइनस 0, तो एमपी क्या हो गया हमारा? 50। ओके नेक्स्ट एक्स्ट्रा लेबर यूनिट हमने यूज़ की है, 2 यूनिट्स ऑफ लेबर्स वी हैव यूज्ड। टोटल प्रोडक्शन, जब एक्स्ट्रा लेबर यूज़ किया टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ओके 90 यूनिट्स जो हमारा टोटल प्रोडक्ट हो गया है। ठीक है 50 to 90 टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया है हमारा। ठीक है सो by increasing the labor units we have increased the total output, that is 90 units. Okay now we will calculate the AP average product TP over L. Now the TP is 90 and labor unit is 2. Okay so that will become 45 units. Okay average product has been reduced from 50 to 45 but the TP is increased. MP can also be calculated by putting the values TPN, that means N is the labor units. Now the labor units has become 2 units. Okay so TP at nth unit, that means TP at 2 units of labor, that is 90. TP at n minus 1 units, that is 2 minus 1 at 1 unit of labor, TP was 50. Okay TP at n units of laborers, now the value of n is 2 laborers. Okay so TP at 2 units of laborers is 90. TP at n minus 1, 2 minus 1 करेंगे तो हमारे पास TP at 1 unit of labor आ जाएगा 50, तो 90 minus 50 that is 40 units. Okay so 3 units, so that means TP will constantly increasing with a certain proportion. अब TP हमारा increase होता जाएगा, say 120 units है, AP हम calculate कर सकते हैं by dividing, that is 40, MP is 120 minus 90, that is 30. Okay so this is TP and AP and MP. Okay so tabular presentation हमारी इस तरीके से थी, एक शेड्यूल में हमने इसको देखा। नेक्स्ट हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन में रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे, दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ TP AP एंड MP, टेबुलर प्रेजेंटेशन के थ्रू हमने देखा। हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन में देखते हैं तो कर्व्स ऑफ TP एंड MP एंड AP, व्हाट डज दे से? TP कर्व, AP कर्व एंड MP कर्व। यहाँ पे हम स्टेजेस ऑफ टोटल प्रोडक्शन भी डिफाइन कर देंगे। ठीक है टोटल प्रोडक्शन कर्व में ही। सो बेसिकली TP हैज 3 stages, टोटल प्रोडक्ट हैज 3 stages. One is first stage is known as increasing returns, second stage is known as diminishing returns and third stage is known as negative returns. We have already discussed about it. So how to draw the curve? Okay take the OX axis as the base of drawing the TP curve. Okay TP curve को draw करने के लिए हम OX axis को base लेंगे। फर्स्ट स्टेज, तो ठीक है हमारी जो फर्स्ट स्टेज होगी TP की, OX axis is the base. Okay so we are taking जो OX axis है हमारे TP के लिए convex, at the first stage TP will be convex to OX axis. Okay फर्स्ट स्टेज में TP OX axis के convex रहेगा, OX axis के convex रहेगा, so it will be like this. Till this that point we are taking the first stage. Okay it is convex to the OX axis, ये OX axis के convex रहेगा। लॉजिक क्या होगा वो हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम स्टेज 2 की बात करते हैं, तो स्टेज 2 में ये कनकेव हो जाएगा। ओके ड्यूरिंग स्टेज 2 TP will be concave to OX axis, so it will be concave.
So till this point, we are taking our stage 2. So in the first stage, TP will convex to OX axis, and second stage, it will be concave to OX axis. Okay, so we have completed 2 stages, and at the third stage, it will fall down. थर्ड स्टेज में टीपी जो है डिक्रीज हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट स्टेज इज नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स. ओके, कन्वेक्सिटी शोज दैट टीपी इज increasing with the increasing rate. Okay, TP is increasing with the increasing rate. Second stage is showing or the stage of decreasing returns or diminishing returns. It means TP increases but at decreasing rate. Okay, जो rate of increment है वो slow हो जाएगी या वो decrease हो जाएगी. Still TP will be increasing. TP increase तो हो रहा होगा, लेकिन उसकी जो rate of increment है वो decrease हो जाएगी. जैसे हमने टेबल में देखा था, initially TP था 50, then हो गया 90, then हो गया 120. That means increase तो हो रहा है टेबल में या टेबल के अकॉर्डिंग. वहाँ पे हमने कोई स्टेजेस नहीं दिखाई थी. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 50, 90 एंड 120, सो TP इज इंक्रीजिंग. ओके, बट द रेट ऑफ इंक्रीमेंट सी 0 to 50, पहले कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ रहा था, देन 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू की, देन वो इंक्रीज हो गई 90 हो गई, एंड देन 120. दैट मीन्स द रेट ऑफ इंक्रीमेंट 50, 40, 30 इस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है. पहले 50 यूनिट्स ऐड हुई, देन 40 यूनिट्स ऐड हुई, नाउ 30 यूनिट्स ऐड हुई. ओके, सो दैट इज द स्टेज ऑफ decreasing or diminishing returns. That means TP is increasing 50, 90, 120, but the rate of increment जो addition हो रहा है TP में वो consistently decrease होता जा रहा है. Okay, so this is the stage of decreasing returns. Like this, increasing returns भी इसी तरीके से होगा कि जो rate of increment है वो ज़्यादा होगी. Okay, see output या quantity 1, 3, 6, 10 लेबर यूनिट्स हमारे पास यहाँ पे हैं. एडिशन हम देखें 0 to 1, 1 यूनिट हमने ऐड की, 1 to 3, 2 यूनिट्स हमने ऐड की हैं, 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स. ओके, सो TP इज इंक्रीजिंग 1, 3, 6, 10 यूनिट्स. ओके, एंड विद एन इंक्रीजिंग रेट एवरी टाइम मोर एंड मोर यूनिट्स आर बीइंग एडेड टू TP. ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स TP में ऐड हो रही हैं. दिस स्टेज विल बी कॉल्ड एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स. ओके, जब TP इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हर बार पहले के मुकाबले ज़्यादा यूनिट्स ऐड की जा रही हैं TP में, तो दैट विल बी इंक्रीजिंग रिटर्न्स. पहले 50 यूनिट्स ऐड हुई थी तो हम अब 60 यूनिट्स उसमें ऐड कर देंगे. ओके, 110 बन जाएगा, देन 70 यूनिट्स ऐड करेंगे, 180 हो गया हमारे पास. ओके, सो दिस विल बी इंक्रीजिंग रिटर्न्स. एंड एट द थर्ड स्टेज, दैट इज द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. यहाँ पे TP इंक्रीज नहीं होगा, दैट मीन्स TP में कोई एडिशन नहीं होगा. TP विल स्टार्ट डिक्लाइन. ओके, कोई एडिशन नहीं हुआ है, डिक्रीज. पहले जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी उससे भी कम यूनिट्स प्रोड्यूस. सपोज इस पॉइंट पे हम 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इस पॉइंट पे हम 30 ही यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे. दैट मीन्स डिक्रीज हो गई. सो दैट इट विल बी नोन एज नेगेटिव रिटर्न्स और स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. ओके, so these are the 3 stages: increasing returns, decreasing returns and negative returns. Okay, all these stages happen due to MP or according to MP, not due to, according to MP. OX axis and OY axis. Till first stage where TP was increasing with the increasing rate. That means TP में जो addition हो रहा था वो हर बार ज़्यादा हो रहा था. Okay, तो जो एडिशन है वही हमारा MP हमने डेफिनेशन या मीनिंग में देखा था, एडिशन मेड टू TP. ओके, हर बार ज़्यादा एडिशन हो रहा है तो दैट मीन्स MP भी इंक्रीज होगा. सो टिल फर्स्ट स्टेज MP विल बी इंक्रीजिंग. MP इंक्रीज हो रहा होगा हमारा. ठीक है, व्हेन द एडिशन हैज़ बीन डिक्रीज और स्लोअर डाउन. ओके, जब एडिशन डिक्रीज हो गया है, स्लो डाउन हो गया है, दैट मीन्स पहले से कम यूनिट्स ऐड हो रही हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा MP डिक्रीज होना या डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा टिल सेकेंड स्टेज. ओके, जब थर्ड स्टेज शुरू हो रही है, थर्ड स्टेज में क्या है? नेगेटिव रिटर्न्स. दैट मीन्स TP में एडिशन नहीं हो रहा है, हम पहले से भी कम यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. दैट मीन्स MP नेगेटिव में चला जाएगा. दैट मीन्स एडिशन हो ही नहीं रहा है. पहले जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे उससे कम, 50 यूनिट्स पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 30 यूनिट्स इस पॉइंट पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, तो हम डिफरेंस निकालेंगे तो that will be negative. 30 minus 50. पहले earlier we were producing 50 units, now we are producing 30 units. The difference will be minus 20. That will be stage of negative returns. Due to negative MP, this stage is named as negative returns. That means
In third stage, TP starts decline. Okay, that's why it is known as negative returns. So this is diminishing, MP is decreasing, MP is increasing, and MP became negative. Okay, these all the three stages are named after the process of MP or the change in MP. जब तक MP इंक्रीज हो रहा था तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज थी, जब तक डिक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रिटर्न्स की, और जब MP नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव रिटर्न्स की हमारी स्टेज आ गई है. उसके पीछे कॉजेज या रीजंस क्या है? रीजंस है कि एट द फर्स्ट स्टेज जब हमने प्रोडक्शन शुरू किया है, ठीक है, फिक्स फैक्टर हमारा फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो एट द फर्स्ट स्टेज फिक्स फैक्टर वाज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड. ठीक है, फर्स्ट स्टेज में फिक्स फैक्टर पूरी तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हुआ है. सो एज एंड व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, द fixed factor goes on used efficiently or fully. Okay, जैसे जैसे हम लेबर यूनिट्स इंक्रीज करते हैं हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होने लगता है, क्योंकि एट फर्स्ट स्टेज और इनिशियली फिक्स्ड फैक्टर रिमेन्ड अंडर यूटिलाइज्ड. ओके, जब लेबर यूनिट्स बढ़ाएंगे तो उसका यूटिलाइजेशन या उसका यूसेज इंक्रीज होगा. दैट मीन्स फिक्स्ड फैक्टर is now being efficiently used. That's why TP or total output has been increased. When we go to second stage में जब हम जाते हैं तब हमारे फिक्स्ड फैक्टर नियर टू फुलर यूटिलाइजेशन है. दैट मीन्स फिक्स्ड फैक्टर कंप्लीटली या फुली यूटिलाइज हो गया है. अब हम उससे ज़्यादा टोटल आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकते. ओके, सो एज एंड व्हेन वी आर मूविंग टूवर्ड्स और मूविंग थ्रू द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और TP बाय इंक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, नाउ वी हैव reached in the second stage. So if we still increase the labor factor or variable factor, and the fact is that the fixed factor has been fully utilized, now it will not contribute much to the total production because fixed factor fully utilized हो चुका है. ठीक है, उससे ज़्यादा लेबर फैक्टर्स को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो अकेला लेबर फैक्टर प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है. फॉर एग्जांपल लैंड की एक मैक्सिमम फर्टिलिटी या जो उसकी फर्टाइल कैपेसिटी होती है, अगर उसको हम एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, ठीक है, तो लेबरर्स को इंक्रीज करके ही हम लैंड को कम्प्लीटली फर्टाइल या फिर अकेला जो है प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते. लैंड की फर्टिलिटी भी मैक्सिमम हम एक्सप्लॉइट कर चुके हैं. ठीक है, तो उसकी फर्टिलिटी जो हम एक्सप्लॉइट कर चुके हैं तो उसके बाद सिर्फ लेबरर्स बढ़ाने से आउटपुट इंक्रीज नहीं हो जाएगा. अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें फिक्स फैक्टर को इंक्रीज करना पड़ेगा. ओके, लेकिन शॉर्ट रन में ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, व्हेन वी रीच इन द थर्ड स्टेज इज द स्टेज वेयर द फैक्टर वेरिएबल फैक्टर बिकम्स मोर देन द रिक्वायरमेंट. दैट मीन्स द स्टेज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. दैट मीन्स वेयर मोर देन द रिक्वायर्ड पर्सन्स आर एंगेज्ड. अब हमने लेबर फैक्टर्स इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि जिनकी ज़रूरत भी नहीं है हमें. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होंगे, वेरिएबल फैक्टर के बीच में, लेबरर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाएंगे. दे विल बिकम वर्क शर्कर. ओके, सो हमारी जो टोटल आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाएगी. क्लियर? सो इस वजह से अलग इन कॉजेज की वजह से अलग अलग हमें आउटपुट की जो स्टेजेस हैं वो देखने को मिलती हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन MP एंड AP, MP इनिशियली इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज एंड बिकम्स नेगेटिव. ओके, जो AP है हमारा एवरेज प्रोडक्ट है, ठीक है, वो डिक्रीज होता है, लेकिन MP से जो डिक्रीज होने की रेट है वो MP से काफ़ी स्लो होती है. ठीक है, तो MP और AP का जो रिलेशनशिप है, स्टेजेस अगर हम यहाँ से हटा दें रिलेशनशिप दिखाने के लिए, यहाँ पे AP और MP का रिलेशनशिप दिखाने के लिए हमें स्टेजेस की ज़रूरत नहीं है. The one more thing, AP will not become zero, MP can become zero. MP zero भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि जब कुछ एडिशनल यूनिट टोटल आउटपुट में ऐड नहीं हुई है, 50, 50, 50, ओके, टोटल आउटपुट रिमेन्ड सेम, तो MP हमारा जीरो रहा. ठीक है, तो MP कैन बिकम जीरो. ओके, क्योंकि एक एडिशनल फैक्टर ने कोई एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हमें करके नहीं दी, तो MP जीरो हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, वेयरएज AP जो है वो नेगेटिव और ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्शन हमारा नेगेटिव नहीं हुआ है. ठीक है, सो AP और MP का जब हम रिलेशनशिप दिखाते हैं तो AP जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, डिक्लाइन होता है. जो चेंज होता है AP में वो स्लो होता है देन MP. ऑब्वियसली दैट मीन्स MP जो है, ठीक है, वो AP से ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होगा तो मैक्सिमम पॉइंट पे जल्दी पहुंचेगा, और जल्दी ही डिक्रीज होएगा तो वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पे भी जल्दी ही पहुंचेगा. ठीक है, तो कहीं ना कहीं MP जो है AP को कट करेगी. ओके, बिकॉज इफ दिस इज AP, both are increasing. AP and MP both are increasing initially at the first stage, both are increasing, but at this point
say point A, MP has reached its maximum point because this is the first stage of production. Okay, this point is also known as the point of inflection because यहाँ पे rate change हो जाती है. ठीक है, पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता था, अब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो रेट चेंज हो गई है, तो इस पॉइंट को हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नाम दे दिया है. ओके, सो एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एमपी इज मैक्सिमम बिकॉज इसके बाद पीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, दैट मीन्स एमपी डिक्लाइन करेगा. ओके, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एमपी इज मैक्सिमम. व्हेन एमपी इज मैक्सिमम एपी इज स्टिल राइजिंग. एपी अभी भी इंक्रीज कर रहा है, राइज कर रहा है. ओके, एंड व्हेन एमपी cuts AP, okay, that is the maximum or the top of AP. MP जहाँ पे AP को काटता है वो उसका टॉप होगा या मैक्सिमम पॉइंट होगा. दैट मीन्स एक छोटा सा पॉइंट हमें इस ट्राइंगल से मिलता है, पॉइंट A to B. इस पॉइंट को हमने नाम पॉइंट A दे दिया और इस पॉइंट को हम B देते हैं, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है. इस ट्राइंगल में एक क्वेश्चन है कि व्हेन MP डिक्रीजेज व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ AP. जब MP डिक्रीज हो रहा है तो AP की सिचुएशन क्या है? AP इज स्टिल राइजिंग. ओके, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज AP की जो चेंज रेट ऑफ चेंज है वो स्लोअर है देन MP. AP धीरे धीरे चेंज होता है, दैट्स व्हाई इट रीचेस the rate of change in AP is very slow, that's why it reaches at its top or maximum later than MP. MP से ज़्यादा बाद में जो है अपने maximum पे पहुँचेगा. That's why when MP decreases, AP is still rising. Okay? और AP एक point ये बनता है, एक question ये है कि जहाँ पे MP AP को काटता है वहाँ पे AP की situation या state क्या है? What is the status of AP at the point of intersection? Okay, point of intersection पे AP का status क्या है? At this point AP is at its maximum. AP वहाँ पे maximum होगा, उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और ये इट ऑल हैपन्स इन सेकेंड स्टेज. ओके, जहाँ पे एमपी एपी को इंटरसेक्ट करता है या काटता है वो सेकेंड स्टेज में हैपन होता है. ओके, सो दैट वाज द रिलेशन बिटवीन टीपी एपी एंड एमपी. ओके.